इस समय जो शेयर बाजार का रिएक्शन है उसमें काफी उछाल देखा गया है, तो एक बजट जो है वो पॉजिटिविटी के साथ आया है, आप कह रहे हैं? It's up Yes. more than 1,000 Certainly it's points. with the positiveness. That's the reason why you see there's a progress in the share market too. तो शेयर मार्केट में ये उछाल है, और मैं आप सब लोगों से एक कमेंट चाहूंगी इस बारे में पहले, मुकेश जी, कि शेयर बाजार में भी उछाल देखा गया और काफी उछाल देखा गया है, तो इंडस्ट्री कैसे इसे देख रही है? ये टैक्स में कटौती जो है वो, और जो बिग टेक अवेज है इस बजट के, वो आपके लिए क्या होंगे अगर समराइज करें तो? अगर एक तो टैक्स में कटौती है, दूसरी सिंप्लीफिकेशन के नाम पे काफ़ी चीज़ें की हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स जैसे कमिश्नर अपील्स जो डिस्पोज करती थी फर्स्ट अपील, वो अभी डेलीगेट कर रहे हैं जॉइंट कमिश्नर को। जो छोटी अपील्स होंगी इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स की, उसकी रेजोल्यूशन जल्दी होगी। हाई इनकम कैपिटल गेन्स अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में 10 करोड़ के ऊपर है तो उसके पर टैक्स ज़्यादा लगेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी हाई वैल्यू पे उस पर ज़्यादा लगेगी। टीडीएस का लिमिट चेंज कर दिया है, 30 से 20% ला लिया है, क्योंकि पैन नंबर नहीं होगा तो उस पर टीडीएस लगता था। तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें की हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लीव एनकैशमेंट की लिमिट थी 3 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, वो इन लोगों ने 25 लाख कर दी है। इससे क्या होगा कि जो रिटायरमेंट के बाद लीव एनकैशमेंट की प्रोसीड्स मिलेंगी वो डिस्पोजेबल इनकम में आ जाएगी या फिर सेविंग्स में चले जाएगी। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। और आखिरी चीज़ ये है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आपकी सैलरी 15 लाख से कमती है ऑन एन एनुअल बेसिस तो उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें डिस्पोजेबल इनकम बहुत बढ़ाएंगी। इससे जो कटौती हुई है, गवर्नमेंट ने ज्यादा गिव अवे भी नहीं किया है। यही वजह लग रही है जिससे शेयर बाजार, जैसा हम दिखा रहे हैं कि शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल है और शेयर बाजार खुशी से झूम रहा है, तो ऐसी क्या बात थी इस बजट में? बात यह है कि शेयर बाजार लुक्स एट 2 levels ऑफ पुश टू द इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड कंजम्पशन डिमांड। जी जी। This very high allocation for investment in infrastructure pushes investment demand, which then trickles down. And what my friend here has just said is that the positiveness created in the reformatting of the tax slabs is positive for the salaried, the bulk of the middle class. So the share market is expecting higher consumption expenditure. So the combination of higher investment expenditure and consumption expenditure working together, I think is leading to an uplift of sentiment all around, including the share bazaar. Would you say that in that sense, it's actually quite a people-friendly budget? We are also going into a general election next year. So in that sense, would all of you say that it keeps an eye on what people would want? I'll get a comment from all of you. Okay, so I'll just come in on this. It is certainly people-friendly in what I just said. But please also note that there is always a hidden fear and an apprehension that in a country running up to general election, we have seen, across the many years that I'm sure you have covered, that often there is a tendency to be populist. And you will notice that this budget is people friendly, but it is not populist. आप भी मानेंगे इस बात को? ये people friendly है लेकिन populist budget नहीं है, एक sensible, rational budget है. You don't know what may get announced later, post budget, because now not everything is announced in the budget. That is very true. No, I think what Vinayak said, I would like support. I'm not an expert on the share markets, but हिंदी में आप बता सकेंगे जी. देखिए, शेयर मार्केट कई बार सेंटिमेंट्स पे भी रिएक्ट करती है और जनरल सेंटिमेंट ये है कि हमारी प्री बजट भी बात हो रही थी. देयर वाज अ फियर कि पॉपुलिस्ट बजट आएगी क्योंकि ये प्री इलेक्शन ईयर है. लेकिन सभी की वेरिएबल्स पे, वेदर इट इज द फिस्कल ग्लाइड पाथ टू फिस्कल डेफिसिट, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है. द इनहैंस स्पेंडिंग ऑन कैपेक्स, द ड्राइव टुवर्ड्स व्हाट आई वुड से सिंप्लीफिकेशन, साधा और मॉडरेशन पर्सनल टैक्सेस में, ये सब कंटिन्यू हुई है. सो देयर इज ऑल्सो अ सेंस ऑफ रिलीफ. ये जो बाउंस और उछाल आप देख रही हैं, शायद ये रिलीफ का भी उछाल है कि जो फेयर होता है, एक शंका होती है कि प्री इलेक्शन लास्ट फुल बजट में काफी पॉपुलिस्ट होगा, वो नहीं आया है. एंड दैट हैज बीन तो किसके लिए ये ज्यादा अच्छा है विनोद जी? आई मीन प्री इलेक्शन है तो बहुत पॉपुलिस्ट नहीं है, लोगों के लिए पीपल फ्रेंडली है, लोगों के लिए बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, शेयर बाजार के लिए अच्छा है, या सबके लिए कुछ कुछ है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें ऐसी कोई नेगेटिव चीज नहीं है जिससे सेंटीमेंट खराब होता.
तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है लोगों का, और गवर्नमेंट ने सबके लिए कुछ ना कुछ किया है. जैसे इंडिविजुअल्स के हाथ में भी ज़्यादा पैसा है, 35,000 करोड़ का टोटल उन्होंने बताया एलोकेशन. तो इसलिए जो शेयर मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट कर रही है, इट्स ए ग्रोथ ओरिएंटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमी शुड डू बेटर बेस्ड ऑन दिस, एंड फिजिकल डिफिसिट आल्सो इज विद इन कंट्रोल. इट इज एज पर देयर targets. Sorry to interrupt. I mean, generally I see that, industry always says 10 out of 10, 11 out of 10, it's all fantastic. We have Sanjay Kapoor joining us as well. If there was something that you wish the budget had, but it wasn't there, is there something you feel was missing, something you would have liked to see that wasn't announced, or are you also gung-ho about it? So I think, so far what we've seen is a very growth-oriented budget, great push in terms of infrastructure, sustainability, green growth, youth, women. At the moment I can't say anything that hasn't been sort of, that we've been expecting. We were, from an industry perspective, from the auto component industry, we've had a great push towards future technologies. PLI schemes have been rolled out, FAME 2. So, we're all heading in the right direction. We've had great growth within our industry. I think a focus on exports, which has already sort of been announced, focus on domestic consumption with all, everything else that's been announced, will definitely push the industry in the right direction. तो आप कैसे रेट करेंगे इस बजट को? आपके लिए सब कुछ अच्छा है, इसमें ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, जैसा IMF ने पहले इंडिया को एक ब्राइट स्पॉट बताया था. संजय, आपको लग रहा है ये बजट ऐसा है जो इस राह पे बढ़ता हुआ दिख रहा है भारत? So हमारे, if we look at it, it's definitely a great budget, from everything that's been announced so far. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सबको एक तरह से और ये अब आप देखोगे MSMEs को भी काफी encouragement मिला है. There's credit guarantee for MSMEs, और हमारे इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा SMEs और MSMEs हैं, तो उनको भी पुश मिलेगा. काफ़ी पुश in terms of skilling, in terms of AI. So these are all headed in the right direction for the automotive industry. Right. Mr. Reddy, anything you would have liked to see? Certainly, like to see, I'll say that. Before that, coming back to the mood elevation in the nation, irrespective of the percentage of people who pay tax in this country, income tax is very sentimental to many people. So therefore, she touched this income tax right now, almost after 8 or 9 years. I think 2014 was when the restructuring of income tax is done. And I think the slabs were last changed in 2018. So since then, certainly, if I'm not mistaken. But very tweaking, just a tweak. Now the percentage has changed. Yeah. Even at the highest slab, she's given a relief of 4% of taxes. From 42.7, it comes down to about 39 or so. Yeah. So I think that's the one which she certainly has done well in terms of touching the sentiment. To that extent, one could call it also, it's a populistic budget. It may not go into the common Aam Aadmi to say that, it touches him. They can always tweak it later on, all right. So that's one positive that I saw. Several things people talked about, positives, all right. But one thing that I personally felt, and CI also has recommendations on it, is on higher education. The spend has to increase. Education spend she has not touched on it at all, except that, creating 3 centers of excellence of AI or 100 labs for 5G. These are probably teachers training, digital libraries, etc. These are some of the tweaks that happened, but I think in higher education we said we should have FDI investments to come by. Section 25 companies have to have equity with them, or there should be funding of higher education. Or market should determine what should be the course fees for private institutions. They can't be one other authority. Those were some of the areas which I would have wished I saw from the budget too. मुकेश जी, ये इस बजट में शेयर बाजार का मूड बहुत अच्छा है. ऐसी क्या बातें लग रही हैं जिससे इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे थे बजट की पहले भी यहाँ पर कि एक ऐसा बजट चाहिए जो इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करे. तो ऐसा क्या है इसमें जो विदेशी निवेश को भी और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दे? मैं सुन रहा था पीपल्स बजट, पॉपुलर्स बजट. मेरे ख्याल से ये पीपल्स बजट है, पॉपुलर्स बजट नहीं है. दोनों में से कोई नहीं है. ये एक यूनिक बजट है. अच्छा. जिसमें इन्वेस्टमेंट थ्रस्ट मिल रहा है. विनायक जी ने बात किया इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्टमेंट थ्रस्ट कैसे मिल रहा है, और डिमांड और कंजम्पशन को थ्रस्ट मिल रहा है टैक्स रेट्स चेंजिंग के कारण. सो आई थिंक इट्स अ यूनिक बजट बिफोर इलेक्शंस. व्हाट इज अ पॉपुलर्स बजट एट द एंड ऑफ द डे? पॉपुलर्स बजट्स हिस्टोरिकली आर नोन टू बी बजट्स वेयर बिफोर इलेक्शन you give away, you enhance the allocation. Basically, these are freebies that are given. Now, one thing is to say that you're meeting a social objective by giving away these freebies. That is not what she has done.
she's put it out very intelligently. Say, let me try and do it a much more productive manner. Let me put more money in the hands of middle class, in the hands of higher middle class, and boost consumption. तो जो टैक्स स्लैब्स चेंज हुए हैं वो एक तरीका रहा है जिससे लोगों की जेब में पैसे ज्यादा गए हैं, हालांकि फ्रीबीज नहीं है. फ्रीबीज नहीं है इस बजट में, एटलीस्ट अनाउंसमेंट तो कोई फ्रीबीज अनाउंस नहीं किया था. सो इन्वेस्टमेंट लेड बजट, propelling domestic manufacturing growth, giving away benefits to MSME, self-employed people. Really, these are the important themes for the budget which is driving the market. Mr. Chatterjee, I mean, given then the global economic situation at the moment, the fact that there are so many headwinds elsewhere, how do you think this budget then helps India to stay on that trajectory to 6.5 to 7%? I mean, is that outlook still a tad optimistic, or do you think that this will really set us on that path of growth? Look, fundamentally, in PPP terms, we are the third largest consuming market in the world. So remember, India's economics is largely governed by domestic demand. As I said, both investment and consumption. So it does everything. This budget does everything to increase sentiment for domestic expenditure, both investment and consumption.